Good morning, and good evening in India. Prime Minister Modi, it's an honor to welcome you to Facebook. And thank you to everyone here in Hacker Square and in our community watching us live in India and around the world. You know, India is personally very important to the history of our company here. This is a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing. And that is something that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. So, you know, we had a great conversation last year in Delhi, and I'm looking forward to having a conversation with you and our entire community about how you see the future of India and the world. And when I think about the future, I'm personally excited about India for a number of reasons. First, one of the greatest opportunities we have in the world today is to connect everyone to the internet. The internet provides access not only to entertainment and communication, but also vital information around health, education, and jobs. In fact, for every 10 people who gain access to the internet, about one person gets lifted out of poverty and about one new job gets created. Now, there are still 1 billion people in India who we need to connect to the internet. And connecting them represents one of the greatest opportunities available to humanity today. So I'm deeply appreciative of Prime Minister Modi's commitment to Digital India, to make this enormous opportunity a reality for all Indians. And I'm personally also impressed by the example Prime Minister Modi has set of using the internet and social media to communicate directly with Indian citizens. Whether spreading messages of peace or campaigning for women's rights or children's development or Digital India, it's fitting that the leader of the world's largest democracy is also setting the example for all world leaders for how they should connect with their citizens in the future. When everyone can make their voices heard online, that's when we can have meaningful conversations about the future. And that's how society can come together and achieve these shared goals. So, you know, the last time that a Prime Minister of India visited California was in 1982. And a lot has changed since then. Today, India is a global leader. Indian businesses and culture are transforming people's lives around the world. And for India to keep making progress, India needs to be a leader online. And Prime Minister Modi, you are an example of what that looks like. So I'm excited to hear today about how you see these goals and why the world should be optimistic about the future of India. Thank you and welcome to Facebook. Thank you. Thank you. मार्क, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। Mark, thank you very much. कि आज मुझे फेसबुक के हेडक्वार्टर पे आकर के I'm really happy that I've been able to come दुनिया today जिसके to साथ जुड़ी Facebook's है, headquarters. उनके साथ मुझे आज The people who are connecting the रूबरू world, में I'm having the जुड़ने का अवसर opportunity मिला to है। connect with you today. विज्ञान और आध्यात्म का नाता Science
and technology, हो भी सकता है it's something that मार्क ने आज न बताया होता if Mark hadn't mentioned this today, probably the world wouldn't have come to know about it. अमेरिका से एक नौजवान कुछ करने के सपने देखता है Many American youth have dreams of doing something, और विज्ञान की दुनिया में जिसने and those who are successful in the world of science वैसे and technology, उसे कहते हैं कुछ भी करने से पहले हिंदुस्तान जाओ it's astonishing that their gurus would tell them to come to India before they do anything else, to go to a temple there वहां जाकर के तुम अपनी and बात बताओ and तुम्हें रास्ता मिल think about what you want to do and you'll find the way. ये बात अपने आप में एक I think this is really something quite incredible. दुनिया के लोगों के लिए आज मार्क आपकी बात सुनकर के बहुत बड़ा I आश्चर्य think people all across the world would be pretty surprised to hear what you said today, Mark. कि And I जो प्रेरणा आप hope that the inspiration जिस प्रेरणा that you got प्रारंभ किया है and the inspiration that helped you to start what you started, ये सिर्फ I hope that will not just be बैंक अकाउंट को बढ़ा something to enhance your company's ये bank balance. दुनिया के करोड़ों I hope आवाज बन that you will be the voice of millions and billions of people all over the world. एस्पिरेशंस की I hope you will be able to become a medium for the hopes and aspirations of millions and billions all over the world. सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की And I hope that the aspirations that people have all over the world, I hope this will keep that flame alive. And in that spirit, I salute your spirit, I salute what you have done, and I thank you for it. आपने सवाल You did ask the question, कि लोग भारत के प्रति why, I mean, बड़ी आशा भरी नजर that there is a lot of optimism when people talk about India, and what do I feel about that? जब आप भारत आए So when you came to India, आशा भरी नजर you went to a temple in India with a lot of hopes. कहां से कहां And look from where to where you've reached. आपका अनुभव कहता है So your experience जो भाषा shows that आशाएं अपेक्षाएं हैं those who पूरा करने का come to India with certain hopes and aspirations, there is something that will help you complete that, to meet those hopes and aspirations, and that's your experience is showing you that. सबसे बड़ा लोकतंत्र India is the world's biggest democracy, and if you look at that from an economic perspective, now whether it's the World Bank, IMF, दुनिया की सारी or the world's rating agencies, एक स्वर से सब लोग कह रहे हैं all of them are saying in unison बड़े देशों that among the big economies in the world today, India is one of the fast growing economies in the world today. आज हम $8 trillion इकोनॉमी We are an $8 trillion economy today, मेरा ड्रीम है and my dream $20 trillion is to become a $20 trillion economy. और उस काम को करना है मुझे And I तीन need to focus on three aspects if I have to achieve that vision. One is the agricultural sector, the service sector, and the manufacturing sector. आप वो लोग दुनिया से जुड़े हुए हैं, जिनका सबसे बड़ा You कंट्रीब्यूशन are associated with the service sector, और मैं सर्विस सेक्टर की ताकत and I have seen that the service sector is an extremely powerful sector. And if we look at tourism alone, just tourism, भारत के पास टूरिज्म के क्षेत्र में India has such a huge potential in the field of tourism. It has a huge potential for job creation. And विश्व if we निकट look at the technology that we have today, which has brought the world so close together, पैदा कर दिया it has created a kind of feeling of oneness. And obviously, if tourism grows,
There will be more jobs in the tourism sector, in the service sector. बड़ी ताकत बन And I think that really can lead to a lot of strength. कि पिछले साल सवा साल In the last 1 to 1.5 years, नजरिया बदला the view that people have of India, I think if you किसी विदेश ask any Indian or if you speak to somebody from abroad, गर्व के भाव से देखता है generally most people are very proud when they look at India, when they speak of India. It's amazing how quickly perceptions about India have changed in such a short period of time. And it's महीने में सबसे बड़ा काम हमारा in the last 15 years, I think one of the major things that we have done is to restore that lost confidence that people in India, that people had. We've brought in a new level of confidence, वही चीजों में and बदलाव करते हैं I believe that that is what brings about change. पेशेंट भी A patient in the intensive care station of a hospital, when he knows that my doctor has come, will be looked after, he gains a new confidence that he will get well. वाला पेशेंट भी बाहर आ जाता है And even a patient in the intensive care unit can come out. All right. So we have the first question from the thread. We received more than 40,000 comments and questions on our Facebook post about this town hall. So that's pretty incredible engagement. And several people have flown in, and several people have flown in today to ask their questions. But before we call them up, I actually am going to start with one for you. You were one of the early adopters of the internet and social media and Facebook. And did you at that point think that social media and the internet would become an important tool for governing and citizen engagement in foreign policy? जब मैंने सोशल मीडिया को अपनाया तब मुझे ही मालूम नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा, कभी प्रधानमंत्री बनूंगा। तो मैंने ये तो सोचा नहीं था कि सोशल मीडिया का मुझे गवर्नेंस में भी काम आ सकता है। मैं जब सोशल मीडिया से जुड़ा तो एक टेक्नोलॉजी के प्रति मेरी क्यूरियोसिटी रहती थी। मैंने देखा कि मैं किताबों के द्वारा दुनिया को समझने की जो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि टेक्स्ट बुक के बजाय अगर गाइड मिल जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। और गाइड से भी अगर कोई श्योर सजेशंस दे देता है तो और अच्छा लगता है। मेरे लिए सोशल मीडिया ने यह काम किया। मुझे बहुत ही कम समय में 2-4 शब्दों से मुझे जिन चीजों की जरूरत थी वो मिल जाती थी। और दूसरा फायदा ये हुआ कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। बहुत मेरे पास वो सौभाग्य नहीं था कि मुझे कोई ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकूं, लेकिन मेरी उस कमी को सोशल मीडिया ने भर दिया। 2-4 शब्दों से भी मेरी दुनिया चल जाती थी और उसके कारण मेरी थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं जो कभी अपने आसपास की दुनिया से ही सोचता था, एक पूरे विश्व के दायरे तक उसे छूने का मुझे अवसर मिला। मैं जुड़ता चला गया और जैसा जैसा मैं जुड़ता चला गया, दुनिया ने भी मैं जैसा हूं वैसा मुझे स्वीकारना शुरू कर दिया। और इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि आप जैसे हो वैसे जब दुनिया आपको स्वीकार करती है तो उससे बड़ा आनंद का कोई अवसर नहीं होता। वरना क्या है, लोग कहते हैं हाँ आप अच्छे हैं लेकिन ये होता तो अच्छा होता, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा ये सोशल मीडिया पे वो प्रॉब्लम भी नहीं है। आप जैसे हैं वैसे दुनिया स्वीकार करती है आपको, उसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है और इससे आपका दायरा बहुत तेजी से बढ़ता है।
मैंने ये जो पहले अनुभव किया वो इस दायरे को बढ़ाने वाला अनुभव किया। जब मैं सरकार में आया तो मेरे सारे दरवाजे खुल गए। मैंने देखा सरकार का एक प्रॉब्लम होता है, उसका और जनता के बीच बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ी खाई होती है। और जब पता चलता है तब 5 साल हो जाते हैं, चुनाव आता है, रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि भाई इतनी बड़ी गैप थी। सोशल मीडिया के कारण डेली वोटिंग होता है। मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी वोटिंग चलता होगा कि मोदी ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है। आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है, गलत करने से डरता है, और गलती सुधारने का अवसर पहले 5 साल में एक बार चुनाव के बाद होता था, आज हर 5 मिनट के बाद होता है। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत बन गया है, और इसलिए मैं सभी राजनेताओं से, दुनिया के सभी राजनेताओं को, सोशल मीडिया से भागने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जुड़िए, आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। अच्छी सरकार तब चलती है जब आपको इंफॉर्मेशन चैनल बहुत हो आपके, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती हो। सरकारों के पास पहले मैकेनिज्म था भी तो बड़ा स्लो था। कहीं पर कुछ हो जाता था तो 24 घंटे के बाद जब न्यूज़पेपर आता था तब पता चलता था यार वहां कहीं हुआ है। आज 24 सेकंड में पता चलता है कि दुनिया के उस कोने में ऐसा हुआ है। और इसलिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए ये सबसे बड़ा सोर्स है। और अगर गवर्नमेंट जागरूक है, सतर्क है, कॉन्शियस है, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन से वो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकते हैं, और काम की गति को बहुत बढ़ा सकते हैं। और उस अर्थ में मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया ने गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब मुझे सवाल पूछा डिप्लोमेसी का। देखिए, डिप्लोमेसी पहले क्या होता था, कंट्री कैपिटल एक दूसरे से जुड़ते थे। दिल्ली वॉशिंगटन से जुड़ता था, दिल्ली टोक्यो से जुड़ता था, नेताओं से जुड़ते थे। सोशल मीडिया के कारण एक देश दूसरे देश के नागरिकों से जुड़ता है। आज मैं चाइना में सोशल मीडिया का अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं भी वहां भी एक्टिव हूं। और मैं वहां चाइनीज लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता हूं। आपको हैरानी होगी, मैंने चाइना की वीबो पर उनके प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई दी। चाइना के नागरिकों के लिए उनके प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक न्यूज थे, और वो इतना वायरल हुआ था, पूरे चाइना में इतना वायरल हुआ था। अब ये डिप्लोमेसी का रूप कहां किसी ने कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था। मैंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, उनका एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल पे हिब्रू भाषा में शुभकामनाएं दी। वो वायरल हो गई। लेकिन सबसे बड़ी मजा तब आई जब उन्होंने मुझे इसका जवाब थैंक्स हिंदी में भेजा। अब देखिए, ये डिप्लोमेसी का नया रूप है जो सीधा जनता से जोड़ता है। और शायद विश्व एक परिवार है, ये फॉर्मेशन में
ये सोशल मीडिया एक कैटलिक एजेंट के रूप में बहुत बड़ी नई भूमिका अदा कर रहा है। One of the reasons why so many of us here at Facebook admire your leadership so much is that we deeply agree in our mission with so much of what you just said. So thank you for that. Our next question is from Veer Kashyap. Veer, why don't you tell us where you're from? Sure. Morning, Prime Minister Modi and Mark. Thanks for having us here. I live in Bangalore right now, and I moved to India 8 years ago, and co-founded babajob.com because I saw a great promise to be able to impact India's digital revolution and enable millions of people throughout the country to get better jobs using the internet. I always felt like, much like governments in the past have had to invest in physical infrastructure, like building roads and railroads, in this day and age, I feel like governments, one of the main roles they should be playing is to invest in the digital infrastructure, which will allow its citizens to get connected and be able to be productive citizens of the global society. So, Prime Minister, my question to you is, what investments is your government going to make to enable, the next 800 to 1 billion people in India to get connected? वीर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने भारत आकर के अपना नसीब आजमाने के लिए प्रयास किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और वीर से प्रेरणा लेकर के यहाँ के और भी नौजवान जरूर भारत आना पसंद करेंगे। ये बात सही है कि भारत ने दो बातों पर इक्वली बल देना पड़ेगा। एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि मेरे देश की वो रिक्वायरमेंट है, और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैं पहले ये काम करूं, फिर दूसरा करूं, फिर तीसरा करूं, तो वक्त चला जाएगा। तो मुझे साइमल्टेनियस सारे चीज करने पड़ेंगे। और ये मेरा कन्विक्शन है कि आज के 21वीं सदी में जितना महत्व हाईवेज का है, उतना ही महत्व आईवेज का है। हाईवे भी चाहिए, इंफॉर्मेशन वेज भी चाहिए। भारत में 600,000 विलेजेज हैं। ये नंबर ही इतना बड़ा है कि लोगों को वहीं से डर लग जाता है। और करीब 2.5 लाख पंचायतें हैं। मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट 5 ईयर में इन सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दूं। जो लोग भारत से परिचित हैं, और दुनिया में भी आप देखोगे तो मानव संस्कृति का जो विकास हुआ है, पहले लोग वहां बसते थे जहां नदी हुआ करती थी। जहां नदी हुई उसके बगल में शहर बसते थे। वक्त बदल गया, जहां से हाईवेज गुजरते थे शहर वहां बसने लग गए। आने वाले दिनों में जहां से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गुजरेगा वहां पर शहर बसने वाले। ये बदलते हुए विश्व को हमने देखना चाहिए, और इसलिए हमारी कोशिश है कि हम गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ी मात्रा में ला रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए वो बहुत उपयोगी हो रहा है। इफेक्टिव गवर्नेंस करना है, इजी गवर्नेंस करना है, इवन इकोनॉमिकल गवर्नेंस करना है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी ताकत है। तो सरकार के फायदे के लिए भी मेरे लिए कंपल्सन है
कि मेरा पूरा शिफ्टिंग डिजिटल वर्ल्ड की हो। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बल हो। जहां तक पैसों का सवाल है, मैं नहीं मानता हूं आज दुनिया में पैसों की कोई कमी है। बहुत से देश हैं उनको पता नहीं है पैसे कहां लगाएं। मैं उनको एड्रेस दे रहा हूं कि हियर इज द प्लेस।